ये काफी पर्टिनेंट है. Like you said, 1 out of 9 girls have this challenge. When I was in medical school, which is early 2000s, हम जब पेशेंट्स देखते थे तो हमारे टीचर्स या हमारे प्रोफेसर्स को भी इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं था. Now, over the years, there has been an increasing awareness of this condition. Rate of detection of the disease is very high. जहाँ पर ये एंडोमेट्रियोसिस की गांठें कह लीजिए या ब्लड डिपॉजिट होता है, उस एरिया को अफेक्ट करने लगता है. सो इट इज लाइक दिस डिजीज इन अ वे बिहेव्स लाइक कैंसर. प्रॉब्लम ये है, इवन कोई ऐसी ब्लड टेस्ट नहीं है जो इसका कंफर्मेशन दे. What impact does it do when it comes to someone who's really looking to conceive? Hi, and welcome to another episode of Expert Talk with Bhavya Desai. आज मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शिंजिनी पांडे के साथ, जो एक काफी वेल नोन सर्जन है और जो स्पेशलाइज करती हैं एंडोमेट्रियोसिस में. अब ये कंडीशन या डिजीज आप कह लो, वो ऐसी है जिसे हम यूजुअली ऐसा पीरियड पेन के हिसाब से भी कह सकते हैं, या ये काफी सारे लड़की लोग को होती है जो उनको पता भी नहीं होता ये है. 1 out of 9 girls are supposedly expected to have this condition, और यूजुअली ये कंडीशन के टाइम पे भी इट कैन अफेक्ट योर डे टू डे लाइफ. आपकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट कर सकता है, आपके नॉर्मल दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे भी रेयर केसेस में ये इम्पैक्ट कर सकता है. तो आज के कॉन्वर्सेशन में हमने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पूरी बात की है कि क्या है इसके कॉजेज, क्या है इसके सिम्टम्स, क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या ये आपके कोई डेली लाइफ है, क्या आपको ये अफेक्ट कर सकती है. तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग एपिसोड है. तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो देन वी लव टू आंसर अबाउट दैट, बिकॉज एक अनटच टॉपिक है, यानी एक रॉ टॉपिक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मेरे हिसाब से. ऑल्सो हमें प्लीज़ फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए. हमारे ऑडियो पॉडकास्ट जो है वो प्लेटफॉर्म्स में जैसे स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल, सब जगह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच वो रिस्पॉन्स के लिए भी. तो प्लीज़ अगर आप ऐसे यूज़र हैं तो यहाँ पे ये सब प्लेटफॉर्म्स में हम एक्चुअली अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन. Hi, Dr. Shinjini Pande, and welcome to Expert Talk with Bhavya Desai. Very, very excited to have you here. Thank you so much, Bhavya. And actually, I must thank you for giving me this great opportunity to speak on a topic which is a passion of mine. So, Great. let's start. So ये मतलब इसी वजह से मैं काफी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि काफी कम इसके बारे में लोगों ने बात की है. प्लस ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे भी ये टॉपिक के बारे में इतना पता नहीं था कि ये इतना कॉमन भी होता है या कॉमन हो सकता है, स्पेशली आई मीन ऑफ कोर्स इन विमेन. सो इसी वजह से ये कॉन्वर्सेशन मेरे हिसाब से मतलब आई होप कि ये लोगों को हेल्प करें टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट रियली एंडोमेट्रियोसिस इज, एंड क्या उसके बारे में मतलब क्या कॉमन कॉजेज हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई आई एम सुपर एक्साइटेड. So, you basically saying कि ये common है, but let me tell you, common है पर totally unrecognized था. When I was in medical school, which is in let's say early 2000s, हम जब पेशेंट्स देखते थे तो हमारे टीचर्स या हमारे प्रोफेसर्स को भी इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं था. Okay. Now, over the years, there has been an increasing awareness of this condition. Right. Also, the rate of detection of the disease is very high. Okay. And probably in the past इतनी common भी नहीं होगी, and there is probably a real upsurge in the disease, यानी ये बढ़ रही है in the general population. और ये इतनी common है कि इंडिया में ही 25 million औरतों से ज्यादा, 25 million is a slightly older data. ठीक है, recent total एकदम अभी की एनालिसिस तो नहीं अवेलेबल है, पर अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 9 औरतों में एक या 1 in 9 women have this disease, so which is like very very common. Right. And the problem is the detection of the disease. It is said कि जब कोई लेडी इस डिजीज से डिटेक्ट होती है तो ऑलरेडी 7, 8 या 9 साल हो गए होते हैं when she's been suffering
changing doctors, sometime बहुत टाइम तो कैसा है, because this is related to the period state, so बहुत सारा pain and all in the society is ignored because the myth is that period pain happens, it's normal. So वो normal करते करते there is a waiting period. These girls are on painkillers, hot water bags. When it crosses a certain limit, then the mom or the family members will take her to the gynae. फिर वहाँ जाएगी. फिर कई बार ही ऐसा होता है कि even the gynecologist who is not so aware of how aggressive the disease can be and what its manifestations can be, तो वो भी फिर undetected हो जाती है. तो जब तक डिजीज स्टेज 3 स्टेज 4 में आ जाती है, तब तक ऑलरेडी 7-8 साल बीत गए होते हैं. और unfortunately many young girls and many young women get recognized already when they are in a advanced kind of a disease. That's the sad part of the story. Right. So ये काफी इंटरेस्टिंग है. एंड एक्चुअली मतलब ये नैरेटिव और बेस थोड़ा सेट करने के लिए ना, पहले एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि what exactly is this condition? मतलब endometriosis अगर आप समझा सके कि what exactly it is. सरलता से समझाने की कोशिश करती हूँ. सो बेसिकली एक वन लाइनर आंसर तो ऐसा है कि endometriosis is a chronic inflammatory disease. Chronic यानी एक जैसे acute नहीं है, जैसे मलेरिया हुआ ठीक हो गया, ठीक है, जिसको हमको डील करना पड़ता है ओवर अ सर्टेन लाइफ स्पैन. ठीक है. chronic like asthma. ठीक है. इन्फ्लेमेटरी यानी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का एलिमेंट है वो बढ़ता है. इट इज रिलेटेड प्राइमरीली टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपकी जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बट हैज मैनिफेस्टेशंस थ्रू आउट द बॉडी. तो अब इसको होल बॉडी डिजीज करार दिया गया. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर इन एंडोमेट्रियोसिस. सो बेसिकली periods start when a girl is around, let's say, any random age between 9 to 12 years of age. एक दफा पीरियड शुरू हो जाता है, फिर महीना दर महीना पीरियड आता है. कब तक आता है? जब तक लेडी की जो उम्र है वो मेनोपॉज ना पहुंचे. मेनोपॉज इज अ वेरिएबल. मेनोपॉज मतलब परमानेंट सेशन ऑफ द पीरियड, परमानेंटली पीरियड बंद हो जाना. अब ये जो उम्र है ये 48 से 54 कुछ भी रैंडम हो सकती है. यानी कि जो पीरियड 12 साल पे शुरू हुआ, मान लीजिए रैंडमली 50 पे खत्म हुआ, अब ये हर महीना आता है. इस दौरान पीरियड में क्या होता है कि हर महीने जो यूट्रस है उसके अंदर ब्लड और एक टिश्यू, जिसको हम मेडिकल की भाषा में एंडोमेट्रियम, यहीं से ये वर्ड एंडोमेट्रियोसिस डिराइव हुआ है. तो ये जो लेयर है ब्लड और टिश्यू की, ये हर महीना यूट्रस के अंदर जमा होती है. और महीने के अंत में, या जो साइकिल टाइम है 28 डेज 30 डेज, ये नीचे के मार्ग यानी कि जो वेजाइना है उससे ये ब्लीडिंग बाहर आ जाती है, जिसको सब लड़कियां पीरियड्स कहती हैं. अब इस कंडीशन में ये जो ब्लड है और ये जो ब्लड टिश्यू है, या तो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता हर महीने, तो थोड़ा ब्लड बॉडी के डीपर पार्ट्स में चले जाता है. या फिर यही ब्लड जो है वो एबनॉर्मल एरियाज में लोकेट हो जाता है, और जो ब्लड केवल और केवल यूट्रस के अंदर ही बनना चाहिए, वो बिकॉज ऑफ सम डिसफंक्शन, ये जो ब्लड एंड ब्लडी टिश्यू है ये पेल्विक एरिया, पेल्विक इज योर लोअर पार्ट, वहां जमने लगता है. तो हर महीना ब्लीडिंग इंटरनली भी होती जाती है और यहाँ पर ब्लड की डिपॉजिट्स बनती जाती है. अब क्योंकि ये जो ब्लड और जो ब्लड जम रहा है, दिस इज नॉट अ नेचुरल स्टेट. ये ब्लड एक वेस्ट है एक्चुअली, व्हिच वाज मेंट बाय नेचर टू बी थ्रोन आउट, टू बी फ्लश्ड आउट वाया द वेजाइना. अब क्योंकि दिस गोज इनसाइड एंड सेटल्स इनसाइड, it causes kind of an inflammation in the body. The body kind of recognizes it as an internal injury. अरे ये क्या हो गया, अंदर कैसे आ गया, it's like bruising, चोट लग जाने जैसा. अच्छा, दूसरा ये है कि जब ये ब्लड जमते ही अंदर कोई मार्ग नहीं है इसको क्लियर करने का, मार्ग से तो आ नहीं रहा बाहर, वेजाइना से तो बाहर आ नहीं रहा, अंदर सेटल होते जाता है. तो बॉडी एक सेल्फ प्रोटेक्टिव बीइंग है, तो वो बॉडी डज अ लॉट ऑफ स्टफ टू काइंड ऑफ क्लियर दिस अवे. गॉट इट. बट in this happening of the clearance, there is a lot of scarring, a lot of problems that arise. और also ये जब ब्लड अंदर जमता है तो ये अलग अलग मार्गों, अलग अलग एरियाज में जाता है. एक ही now the pelvic area, pelvic मतलब निचला पेट आप कह लीजिए. अब यहाँ कोई फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं है ना,
पूरा ब्रह्मांड है अंदर. ब्रह्मांड मतलब पूरा, देयर इज योर यूरिनरी सिस्टम, स्किन, मसल्स, नर्व्स, जो भी कह लीजिए. जहां जहां पर ये एंडोमेट्रियोसिस की गांठें कह लीजिए या ब्लड डिपॉजिट होता है, उस एरिया को इफेक्ट करने लगता है. सो इट इज लाइक दिस डिजीज इन अ वे behaves like cancer, because like how cancer can spread to other organs, right, similarly endometriosis can involve other organs and it can be very debilitating for the lady. Like you can have intestine ka endometriosis, urinary system ka endometriosis. It's not just something that's a period story. It's not. So right. Because so basically मतलब जो blood actually जो flush out नहीं होता है, that can go and settle more often pelvis area में settle होता है, but there is also a possibility कि दूसरे areas में भी जाके settle हो दूर दराज. Right. अगर वो होगा तो then it can have like a much more detrimental effect. Because naturally I'm sure कि body का जो immune system है वो because it's alien to them, so it's fighting that off with like what do you call RBC, YBC to try and like bring it out, but it ends up giving much more harmful effect to that. Okay. इसका I mean endometriosis of course एकदम technical term है. Is there a very common sort of a term जो जिसमें काफी सारी लड़कियां इसको रेफर करती है, normally people do? नहीं बेसिकली क्या होता है कि हिंदी में तो मुझे कोई वर्ड नहीं पता है, बट द सिम्टम्स आर बेसिकली मेजर सिम्टम्स पीरियड पेन, सिवियर पीरियड पेन, फिर ब्लीडिंग डिस्टर्बेंसेस होते हैं, फिर दूसरे सिस्टम्स पर जब इसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट आता है, तो then she will slowly start getting symptoms of the other system, like she'll say I feel so bloated doctor, okay, I get constipated during my periods, I have pain when I pass motions, while pooping I have pain, या urination में मुझे difficulty होती है, या I have difficult sex. So ये जो बातें हैं, ये जब धीरे धीरे आती हैं, then we come to know कि अब ये एडवांस डिजीज है. तो एज सच कोई एक टर्म नहीं है, मतलब कि कोई ये इसको किसी से आप पहचान लो, या एक सिम्टम भी नहीं. कभी कभी तो इतने वेग सिम्टम्स होते हैं, बिकॉज इतना जनरली इन्फ्लेमेशन लेवल ऑफ द बॉडी इज सो हाई दैट दीज वुमेन समटाइम्स कम विद वेरी वेग सिम्टम्स लाइक फटीग, हेडेक्स, मसल पेन्स, एंजाइटी, डिप्रेशन. इट अफेक्ट्स द होल लेडी, द होल गर्ल, आई मीन द होल पर्सन, सो टू से. तो ये इसके बारे में एक रिसेंट रिसर्च वगैरह यही बताती है कि इसको अब एक पेल्विक डिसऑर्डर या गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर से ज्यादा होल बॉडी डिजीज भी कहा जा सकता है. और आप अभी इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो बहुत सारी रिसर्च चल रही है. देयर इज लाइक अ $1 trillion research probably going on in all countries in order to find out the cause of the disease. कि ये जो menstrual blood या menstrual tissue है, ये इंटरनल बॉडी में क्यों एक्टिवेट होता है, या क्या ये उल्टा बहता है, जो यूट्रस में बना वो बाहर वेजाइना के माध्यम से बाहर नहीं आया, क्या ये उल्टा जाकर पेल्विक एरिया में डिपॉजिट होता है, जिसे हम टेक्निकल लिंगो में कहते हैं रेट्रोग्रेड मेंसेस. रेट्रो यानी उल्टा जाना, जैसे रेट्रो स्टाइल ऑफ म्यूजिक, पीछे वाले सालों का. सो पीछे रास्ता अगर कोई लेता है तो ये एक कॉज हो सकता है. फिर अभी जो साइंस है, और बहुत सारे, खाली यही एक कॉज नहीं, बिकॉज पीछे पीरियड्स जाना तो बहुत सारी लेडीज में होता है. ये जब साइंस ने इसके बारे में पता किया तो पता चला कि व्हेन यू एग्जामिन वुमेन जस्ट आफ्टर देयर पीरियड, सो मेनी वुमेन विल, थोड़ा बहुत ब्लड अंदर पेल्विस में आ जाता है, बट द बॉडी क्लियर्स इट अवे एफिशिएंटली. सो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई इज इन वुमेन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, ये जो अंदर गया हुआ ब्लड है क्लियर क्यों नहीं कर पाते, क्या इनकी इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम है. दूसरा जो है, इफ वी स्टेप बाय स्टेप सी द कॉजेज दैट हैव कम अप इन साइंस, कि इसका कारण क्या है भाई, क्या करा, क्या इसके कुछ खाने से हुआ, क्या इसके कुछ पीने से हुआ, क्या कुछ करने या ना करने से हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में कि व्हाट जेनरेटेड द डिजीज, ये अगर हम सोचते हैं तो इट्स जेनेटिक्स. ठीक है. तो देयर इज एविडेंस टू से कि भाई अगर आपकी मदर्स लाइन में, लाइक आपकी मम्मी, मौसी, नानी जो भी है, तो जेनेटिक्स कैन हैव अ रोल. फिर एपिजेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स यानी एनवायरनमेंट ही तुम्हारे जीन्स को चेंज कर सकता है. जैसे अगर आप आदत डाल दें रोज मेडिटेशन करने की, तो हो सकता है आपको हेल्दियर, बिकॉज दैट्स यू चेंज योर एनवायरनमेंट, दैट changes your genetics. आपसे पास ऑन होगा तो it will be much better. Yeah. So epigenetics में कैसे कहा जाता है कि मान लीजिए पेशेंट की नानी, when patient's mother was in the grandmother's womb, maybe she was exposed to some chemical, let's say. Okay. So that caused that flip. God. And
manifested the disease in the granddaughter. Understood. So this is like transgenerational also. So Right. genetics, epigenetics, environment, exposure that changes your genes. The third thing is the tendency for the blood to move inside is probably more in certain people, or sometimes it is even said कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर, जब लड़की अपनी माँ के पेट के अंदर थी, तो ये जो सेल्स हैं ये ऑलरेडी इम्प्लांट हो जाते हैं बाय एरर into the pelvic area. तो ये भी हो सकता है in utero presence of the cells that normally should only be inside the uterus. Right. गलत लोकेशन में नहीं होना चाहिए. Some error at that level. फिर आगे होता है तुम्हारे हॉर्मोन्स. तो जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी इज द स्टार्ट ऑफ द पीरियड टाइम जो आता है, उसमें जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं, द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन. तो ईस्ट्रोजन इज द इम्प्लिकेटेड हॉर्मोन. तो ईस्ट्रोजन की बैलेंस अगर गड़बड़ है, ज्यादा मैनिफेस्टेशन है, तो इट कैन एक्चुअली कॉज दीज, जिनमें टेंडेंसी है इन चीजों की, दीज implants to grow and bleed inside. Right. Progesterone, which is the protective mechanism, it has been found out in these some of these women कि ये resistant है. ये तो जो hormones के level पे, which is the major pathway where we attack the disease in terms of medication. ठीक है. फिर latest research nowadays shows कि आपकी जो gut bacteria है ना, उसमें अगर डिसबायोसिस है, डिसबायोसिस मतलब हेल्दी बैक्टीरिया ना होना, बिल्कुल सरल भाषा में ऐसा समझो. अभी इंटेस्टाइन पर बहुत रिसर्च चल रही है. इफ यू नो, सारी डिजीजेस या मेनी डिजीजेस का जड़ अगर आपको पता करना है तो वो आपका इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन इज लाइक अ जंगल ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. Now many of these bacteria, they are all living in symbiosis. Many of these bacteria actually help you lead a healthy life. Right. तो अगर ये बैक्टीरिया जो हेल्दी बैक्टीरिया है, या कह लीजिए जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, इनकी क्वांटिटी या इनका वर्क गड़बड़ होता है फॉर एनी रीजन, इफ देयर इज डिसबायोसिस, सो द अनहेल्दी बैक्टीरिया मैनिफेस्ट, और इंटेस्टाइन ऐसी सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब करता है जिसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं. परमिएबिलिटी मतलब कितनी कोई चीज अंदर अब्सॉर्ब करता है जो बॉडी को हार्मफुल हो सकती है और हमारे हार्मोनल और ये एंडोमेट्रियोटिक जो बन रही है उनको एक्साइट कर सकती है. तो गट पर भी आजकल बहुत बड़ा फोकस है. तो अगर सारी चीजों का जब समन्वय होता है, समन्वय मतलब एमालगमेशन होता है, तब डिजीज प्रोबेबली मैनिफेस्ट होती है. बहुत सारा रिसर्च ये भी दिखाता है कि इम्यूनिटी से भी रिलेटेड है. बहुत सारी पेशेंट्स जैसे एंडोमेट्रियोसिस की, उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है, IBS. सो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं वेरिन कि ये अंदर भी जाता है तो भी आपका इम्यून सिस्टम, जो आपके इम्यून सेल्स हैं, उसको अटैक करके क्लियर आउट नहीं कर पाते, एंड इनफैक्ट बढ़ते जाती है डिजीज. सो अब इतना तो देखो, कोई एक कारण तो अभी अनफॉर्चुनेटली साइंस ने नहीं पता किया है. जिस दिन आ जाएगा उस दिन आई एम श्योर देयर विल बी अ राइट. बट मतलब आई मीन मेरे दिमाग में अभी एक्चुअली इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस दैट वी हैव एक्चुअली पुल्ड. बिकॉज पहले जब मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि it is also something which possibly has an impact on the other functioning of the body as well, you know, because मैं उस unilateral हिसाब से सोच रहा था कि it's kind of unidirectional and is more related to the menstrual cycle. But then so वो एक layer actually मैं थोड़ा बाद में peel करना चाहता हूँ. But generally speaking then currently मतलब एक डॉक्टर फिर अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, अगर एक कंडीशन है, so then how does a patient know कि मुझे ये issue है and that's what needs to be approached? Okay. So see, let's divide the symptoms of a patient into the common symptoms and sometimes the rare ones. Uncommon, yeah. So we'll take the common ones first. So common symptoms, because primarily the disease is a disease of the reproductive system, प्रजनन प्रणाली, जनन देने वाली जो सिस्टम है. और ये सिस्टम का जो मेंस्ट्रुएशन है, इट्स लाइक द हॉलमार्क इवेंट इन द मंथ. तो सारे प्रॉब्लम्स फोकस होते हैं शुरुआत में पीरियड इश्यूज से. सो दिस गर्ल और दिस लेडी हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज विल स्टार्ट हैविंग पीरियड पेन. When we score her period pain, so mild, moderate, severe, generally the ones who have more disease will have more pain. These will be the girls who will start saying कि when you take their history, they're saying, doctor, मेरे को तो शुरुआत से दर्द था, but everyone told me it's normal to have period pains. I was the one who used to miss out on the school birthday parties.
I was during my period days. Yes. I was very scared कि मेरे एग्जाम के टाइम पे मेरा पीरियड आ जाएगा तो मैं कैसे मैनेज करूंगी. So periods always have been a scary time for her. She does not take it easily. She's worried. मेरी ट्रिप है, मैं कैसे जाऊंगी. So period pain is the one and the most important symptom that should ideally never be ignored. Okay. The second thing is they have a lot of bleeding issues. Many of these women do bleed more than they should. Sometimes it's not just the amount of the bleeding, it's the duration of the bleed. They bleed for prolonged number of days. And it's not just prolonged number of days, they have spotting. तो वो थोड़ा. So period bleeding and pain issues से ज़्यादातर present करते हैं. Right. फिर इसके अलावा अगर हम नीचे की ही बात सोचें तो सेक्सुअल लाइफ, अगर सेक्सुअली एक्टिव लड़की है तो दिस इज वन मेजर कॉज फॉर पेन ड्यूरिंग सेक्स. और इसका मैं बाद में बात करूंगी. बट इसके अब देखो, अब ये जो इशू है, ये इशू आगे जाकर पर्सनल लाइफ पर, बिकॉज it is a circle, Absolutely. This starts building, so they have partner problems. फिर वो आगे जाकर वो रिलेशनशिप इश्यूज में डेवलप leads to frustration. Yes. फिर these are the girls who will have unsatisfactory sex lives, personal lives, and then फिर ये mind पर influence करता है, so they go into chronic anxiety, chronic depression. So it's not just one thing, it's a mess actually. Right. फिर period symptoms अगर हम एक बार साइड में कर दें, फिर डिपेंड करता है कि कहाँ डिजीज तक पहुंची है. बहुत सारे लोगों को कुछ एक जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्लोटिंग इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम्स दैट कम अक्रॉस. बट द प्रॉब्लम इज ब्लोटिंग आल्सो हैपेंस टू नॉर्मल वुमेन इन द प्री पीरियड स्टेज, जिसको हम पीएमएस बोलते हैं, जिस पर इतने जोक्स बनते हैं. ठीक है, तो वो मूड स्विंग्स और पीरियड के पहले फीलिंग दैट योर बॉडी इज लाइक tight and bloated, and you gain, like as if you gain weight. Water tension. So ये तो बड़ा खाली bloating से तो इसको segregate out करना मुश्किल है. पर ऐसा भी है कि bloating के साथ if you really sit with them and start sitting and asking them about their bowel problems, then they will tell you, नहीं डॉक्टर, periods में या तो डायरिया होता है, या I feel that the passage of motion is not complete. I feel that एक अच्छा सेंसेशन होता है मोशन पास करने के बाद, मुझे वो नहीं आता. सिवियर ज्यादा होगी तो शी एक्चुअली से आई हैव पेन व्हाइल आई पूप, मुझे दर्द होता है मोशन पास करने में. एंड फिर यही यूरिन वाले एरिया में भी यही पेन, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग, कि अभी गए अरे फिर से आ रही है टाइम. तो दीज आर द पेल्विक सिम्टम्स इन जनरल. वन ऑफ द मेजर पेल्विक सिम्टम्स इज बैक एक एंड थाई पेन. So this basically happens because a lot of nerves which go from the spinal cord go out to the limbs, the lower limbs. अगर इन पर impaction आता है, I have a few patients who've actually been taking treatment with ortho माने हड्डी वाले डॉक्टर. तो ये जो है इनकी साइटिका की ट्रीटमेंट चल रही है, साइटिका की चल रही है, और MRI स्पाइन का हो गया है, दुनिया की पैर रेज नहीं कर पा रही, लिटरली टू द पॉइंट दैट the ortho like is unable to, because वो उनका डोमेन ही नहीं है. फिर पता चलता है कि उनकी जो मेन नर्व है, sciatic nerve जिसे कहते हैं, उस पर ब्लड जो है या एंडोमेट्रियल टिश्यू जमकर उस पर गांठ जैसी बन गई. वी कॉल दीज एज डिपॉजिट्स. तो उनको वहां पर डिपॉजिट होकर डीप एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट बन गया. तो एंडोमेट्रियोसिस को बेसिकली क्या है, इसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं. तो जैसे अगर ये आपकी ओवरी में ब्लड जमा हो जाएगा तो आप कहोगे सिस्ट हो गया. ठीक है, अगर ये डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड जहां जहां जमा होगा, जैसे अगर इंटेस्टाइन पे हो गया तो हम कहेंगे दिस इज बॉवल एंडोमेट्रियोसिस, या यूरिनरी एंडोमेट्रियोसिस, या नर्व एंडोमेट्रियोसिस. सो वी गिव इट वेरियस नेम्स. Got your point. If the disease crosses the boundary of the reproductive system and enters into vital organ category. vital organ क्या हो गए, खाने का मार्ग, पेशाब का मार्ग, मसल्स, नर्व्स, ये तब हम इसको एक जनरल वर्ड देते हैं, कहते हैं आपको डीप इनफिल्टरेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में DIE कहा जाता है. यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि ये डीपर एरियाज में पर्कोलेट कर गई या उन पर इम्पैक्ट करी, क्योंकि ये ना उस एरिया में जाकर ऑर्गन डैमेज करा दे. Exactly. अगर ये इंटेस्टाइन की वॉल पर ब्लड और ब्लड के डिपॉजिट्स गिरने लगते हैं, तो फिर ये क्या कुछ ओवर टाइम ये एक लेंथ इन्वॉल्व करने लगेंगे, द ब्लड विल कोट लेयर बाय हार्डन देयर, सिट देयर, then it goes along the circumference and along the depth, and the intestine starts getting narrowed. Got it. So
Then you have a disease. There are patients sometimes who get ignored from smaller towns and all, who come when they reach obstruction of the intestine. यानी कि motion बंद हो गया, उल्टियाँ चालू हो गई. So that is the stage when you really need to treat her very radically. You need to cut that intestine and join the. Right. So this is. So in terms of general whatever daily life as well. Okay. Now मुझे जितना समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि I think in the beginning, usually the symptoms start similar to like how you possibly like go into a menstrual cycle. And सबसे पहले आप हमेशा अपने गायना के पास जाएंगे and गायना को बोलना शुरू करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है. So then, as does the gynecologist ideally dissect and remove like probabilities कि okay these are the possible areas and then you try and dissect? Is that how you reach this conclusion? Absolutely. So the gynecologist will look at the patient, the age, so the symptoms, and will do certain basic tests. Now here the problem again arises that sometimes when it's deep endometriosis especially, a routine ultrasound will not probably be capable of detecting the disease. Sometimes that's another problem कि पेशेंट आती होगी कि नहीं मेरी तो गायनेक ने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया था तो कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ उस टाइम पे, ठीक है. सो देयर यू नीड अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन. आई रिपीट, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इतना पेन क्यों है. अगर अल्ट्रासाउंड अच्छा होता क्या है, वन अनदर वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज, अब ये शुरुआत में ये लड़कियां सब अनमैरिड होती हैं, यंग लड़कियों को ये प्रेजेंट होता है. अब बिकॉज दीज गर्ल्स आर वर्जिन्स, तो हम जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है ना वो इनमें अवॉइड करते हैं. एज अ गायनेक यू विल बी लाइक ठीक है चलो पेट से कर लेते हैं, आप पानी खूब सारा पीकर आ जाना फिर हम पेट पे. that itself is not a very great modality, या उसका depth of penetration ही नहीं है sound wave का. The ultrasound uses sound wave, and then picks up the images. ठीक है, अभी वो तुम पेट के द्वार से कर रहे हो for something that is in the deep pelvis. ऊपर से unfortunately if this young lady is having कहीं गहराई में नर्व में बैठा हुआ endometriosis या किसी लिगामेंट में अंदर या किसी बावल के ऊपर, ये कौन है जो डॉक्टर पकड़ लेगा. फिर वो एक जनरल रिपोर्ट आ जाती है कि सब ठीक है, यूट्रस नॉर्मल, ओवरीज नॉर्मल. ठीक है, फिर आप सोचो, आई हैव पेशेंट्स हु हैव बीन सेंट टू साइकियाट्रिस्ट्स बिकॉज फाइनली द डॉक्टर हैज कम टू द कंक्लूजन कि भाई आपकी डॉक्टर का पेन इधर है, उधर नहीं है. दीज गर्ल्स आर पुट ऑन मेडिसिन्स फॉर इयर्स. सी एंटीडिप्रेसेंट नीडेड फॉर दो patients who have a cause for depression, okay, not for something that is a physical. There is a condition which needs to be treated. So that's how it is. So high index of suspicion is needed in the gynecologist's mind when evaluating a patient with high pain scores during periods, lot of bleeding issues, etc. So, but ये अभी भी मतलब ये thought process है in terms of people. Like it's very interesting जो आपने बोला कि because a lot of them are they come as virgins and they obviously have not had intercourse, which means basically the hymen is still there and they obviously do not want to damage that for either societal pressure or obviously in India, let's be very honest, family pressure, XYZ. So abhi bhi matlab ye thought process kafi look at, because when I'm trying to imagine ke when it comes to your health, that is the matlab usse badi cheez koi honi nahi chahiye. So उसके लिए फिर हम क्या, so even I as a gynecologist I respect the virginal state, okay, so I wouldn't try to, and plus it's painful, so you don't want to instill pain in an investigation to a young lady. So there is a tod na, the tod is get an MRI done. MRI as such is दूध का दूध पानी का पानी if done by a good experienced radiologist. Ultrasound on the other hand, the radiologist needs to be very very good in order to be, even if it's an internal one, to be able to detect the disease well. Nowadays, diagnosis through ultrasound, we have experts across. We're still doing a lot of diagnosis through the internal ultrasound as well, something which is known as a transvaginal ultrasound. But end of the day, the thought is in young unmarried girls, do an MRI. MRI is absolutely the investigation which can be relied upon. Got it.
How ये day to day life में कोई एक woman who has this condition, how does it affect them? Yeah. So it's like it affects them so much. I have patients who have, so I told you, broken relationships, not able to sleep, anxiety, depression, not going to the job. There are women who quit their job because of the disease. In certain countries now, if you're diagnosed with endometriosis, you have extra leave during the period days, leave with pay. Okay, but because the government or whatever it is, the people who decide understand that this is a huge burden it kills your quality of life, your QOL, as it is said. So, in terms of living with the disease, it can make the life very difficult. These girls, these ladies, they have difficulty in doing day-to-day activities on many days. So, if especially if it's an advanced disease, but even otherwise, it does impact their overall it has a chronic element to it. So these girls are always fatigued. They are tired. They complain of constant headaches, migraines. ऐसा वाला ये impact होता है life में. मतलब ये is there a thin line between ये condition of endometriosis and the regular challenges that a woman faces during menstrual time of the month? See, menstruation was not designed as a punishment by Mother Nature. Okay. So normally, except for maybe mild discomfort, I don't think any woman should have any kind of menstruation as a natural state. Okay. So थोड़ा discomfort maybe in your early years of life हो सकता है, but otherwise menstruation is an event in which you should be living your life. I mean, there is no reason why you should feel the except for the discomfort of the changing pads or using tampon, whatever you need to do that. Right. Apart from that, I don't really see why menses should stop anyone from doing anything. Okay. Got your point. From a perspective of the reason is because I mean, being a guy, I'm trying to wrap my head around something, and एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा आते रहता है, and especially now that ये conversation से भी, is that how would you define the pain that a girl goes through during periods, like when you say period pain, तो एक अगर आदमी को ये बात समझानी है in terms of giving an idea of parallel, कि what is the level of pain that they go through, how would you explain? Who? The endo patient? No, a guy. Like just to draw A parallel normal pain. menstrual cramp? Either situations. Actually, in terms of endo, because that is like it's like so how guy doesn't undergo labor. So basically, which is why. So basically, it's so women who have bad endo and also a parallel condition called as adenomyosis. Right. I'm not trying to confuse you, but Yeah. there are two conditions which have the same kind of karan. The cause is similar, Right. same. So in both these conditions, if it's a high score period pain, she will say, doctor, इससे तो मेरे delivery का दर्द अच्छा था. Okay. I mean, for those who have experienced Right. that. So it's almost as बट वही प्रॉब्लम है क्योंकि अभी लड़कों को वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कैसे मतलब इज इट लाइक somebody is punching you 100 times over ऐसे मतलब how comes in phases. Cramp is something like comes goes. Right. So I don't know, maybe you could relate it to some kind of a colic. आप कभी जब बहुत गलत खा लेते हो तो कैसे पेट में स्पाज्म आती है फिर छूटती है, makes you sweat, makes you feel nauseatic. So extreme pain triggers nausea in anyone. So if you're really hit somewhere, sometimes you may just feel like throwing up. So women with extreme pain, they'll give you this history. They say, doc, I just can't eat. I vomit during the first 2 days of my period. I just lie down, I close the lights, I wear an iPad, I take the hot water bag, and I just feel like throwing up. I just want sips of water. This is the level that they will go to. Okay. I mean, when you say, then thoda, matlab, I think some idea comes, but yeah, because I wanted to actually get to the root ke matlab what is the sort of discomfort that you actually feel. No, it's terrible. You ask the woman with stage 3 or stage 4 endometriosis, they are miserable. Understand. Okay. How
how impactful can it be on, like जैसे हमने पहले बात किया कि on the other body parts, like I know you mentioned कि जब deposits अगर दूसरे कोई organs पे जाके रहना शुरू हो जाते तो it can be bad, and of course it will be, but is it something which can also lead to a life-threatening? Absolutely. Yes. So when I said it behaves like cancer, I was meaning it. So basically, you can have life-threatening problems. For example, some patients who have this aggressive tendency for the disease may manifest the disease in multiple parts of the intestine. The intestine is 6-meter long thing. Okay, so they may need multiple. I mean, if the disease is significant, they may need a huge area to be removed. Very rarely, and this is not to frighten the audience at all, but very rarely if the disease is really ignored, and sometimes they may need a permanent bag to poop out. You know, this is very rare. Normally the bag is needed hardly, so that can be one element. Sometimes the disease manifests far and wide, like lungs में हो सकता है, chest में हो सकता है. So you develop something what is known as blood in the chest. Okay. So it's called as, hemothorax. Okay. So these women will have chest pain. They will not be able to breathe, especially during periods. They'll find deep breathing painful. They'll have shoulder pain during the periods. They will cough out blood. Right. The period, the menstrual tissue-like blood during the period. Okay. So ये दूर दराज, but fortunately this is very rare. Got it. Multiple intestine problems are also very rare. Okay, that's good to know. Unheard of. Got it. Okay, so symptoms के बारे में तो हमने we understood. Are there anything that you do which also can lead or cause these things? This condition? Or is it just purely the things that you listed down earlier, which is genes and all of that? Yes. Or any external factors also? So see, there's a lot of research going on. So you can alter your epigenetics, like in the sense that let's start regularly exercising, meditating, let's eat food high in antioxidants. So which may over the years manifest in a general state of well-being, as well as some evidence to show that it may, if not reverse, maybe slow down the process of the disease, right. So to say. But there's nothing to say ki, so there was some research which said that red meat, let's say mutton जिसे बोलते हैं इंडिया में, उसको avoid करना better होगा. There's some research which says gluten, but not much. So अब ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, किसी को भी ये कह देना कि बिल्कुल ये मत खाओ या ये खाओ, ऐसा कोई ये वो नहीं. दिस इज नॉट डायबिटीज, यहाँ कह लो कि शुगर अवॉइड करो, है ना. तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक तो कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. बट आई हैव पेशेंट्स एंड research does show that women who change their lifestyle do get benefited, at least in terms of pain. So doing regular cardio, there is evidence to show that जो cardio करती हैं उनको better results मिलते हैं. जो लोग high antioxidant diet लेती हैं, berries हो गए या वो जो खा रहे हैं, तो उनको benefit मिलता है. आजकल बहुत research चल रही है, herbs वगैरह में भी बहुत sciences में बहुत सारे natural therapies वगैरह का लोग कोशिश कर रहे हैं to see. But the thing is, endometriosis, you can't say. So patients in India, what they do, I mean, this is not, I do respect, it has to be a holistic approach. पर होता क्या, लोग अभी आपको स्टेज 4 एंडो है, स्टेज 4 मान लीजिए इंटेस्टाइन ब्लॉक हो रही है, और आप जाकर कहीं आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराने बैठ जाओगे, ठीक है. सो दैट्स नॉट गोना हेल्प. सी एवरी ट्रीटमेंट का एक टाइम होता है, प्लेस. ओके, सो इट हैज टू बी होलिस्टिक. ऐसा नहीं है कि आपने हर्ब्स नहीं ट्राई करी या वो नहीं ट्राई, वही ट्राई करना पहले जरूरी है. आप सब ट्राई करिए, बट इट हैज टू बी होलिस्टिक. देयर इज अ डेफिनेट प्लेस ऑफ सर्जरी, एंड in certain patients surgery is mandatory. If you don't operate and cut and remove that disease part out, this woman is not going to get better. So you have to understand कि
everything has a place. Every therapy should be amalgamated. Right. So once you see the stage of the disease, like अगर stage 4 पूरा intestine involved है, lungs में है disease, यहाँ है वहाँ है, तो obviously surgery has to be done first. You can then do the other therapies to prevent a recurrence. Right. Recurrence is big time in this disease. Yes, because this is intuitively related to the state of menstruation. आज अगर मैं बहुत अच्छी सर्जन हूँ और किसी की स्टेज 4 डिजीज पूरा भी क्लियर कर देती हूँ तो कल को फिर पीरियड आएगा, वो मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ चेंज, फिर उल्टा जाएगा या फिर अंदर जमा होगा. सो रिकरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट common things that can happen even in the best of surgical hands. Sometimes if the disease ka intuitive state is aggressive, the disease comes back. Therefore, a good surgeon or a good endometriosis specialist is not just someone who does a good surgery. It's someone who can sail her through her journey of life, meaning which get her targets achieved on time. So for example, if I am operating on a young lady desirous of pregnancy, जिसको pregnancy हासिल करनी है, तो मेरी सर्जरी के बाद जैसे हीलिंग होती है, I will, so I have a team. So I will send her to the team who does the fertility work. So this is an era of specializations. Absolutely. यहाँ jack of all trade कोई नहीं होता है, ठीक है? तो I as a good surgeon will operate. I will see to it that she heals well, and I will refer to my colleague who does the fertility work. Absolutely. अब मान लीजिए यंग गर्ल है, अब फर्टिलिटी की बात ही नहीं कर सकता, 18 साल की लड़की है, अभी तो और 10 साल पढ़ाई करेगी, शादी वादी भी कुछ नहीं हुई है. सो हाउ डू यू टेल हर जल्दी बच्चे कर ले? यू कांट टेल हर. Right. So what do you do of this young lady who's been operated at let's say 19, 20 odd? Now you have to keep her disease at bay. So what do? Then you plan treatment for her. You say, भाई देखो egg freeze करा लेना. Then also we think about fertility, and then we give her the medical treatment, also the other holistic treatments. Then we try and control her periods. So that period which is thought to be so important by the especially the Indian society, जिसको एक ऐसा सोचा जाता है कि अरे पीरियड आना मतलब बहुत something that is बड़ा शुभ संकेत या something like that. The family of the endometriotic patient, especially the mother, has to understand, if it's a young lady, has to understand that this very period needs to be stopped. So stopping the period is one of the mainstays of therapy. This is known as amenorrhea. Amenorrhea in medical lingo, and a period बंद करना. So putting her to an amenorrheic state is important कि मैंने आज अच्छी सर्जरी करी, अब मैं आगे डिजीज वापस ना आए. स्पेशली सिस्ट जो होते हैं ये रिकर बहुत करते हैं, जो ओवरीज में होते हैं. तो सिस्ट्स को कर्ब करने के बार बार सिस्ट की सर्जरी नहीं करी जा सकती क्योंकि ओवरी डैमेज हो जाएगी, उसके एग्स खत्म हो जाएंगे, काउंट रिड्यूस हो जाएगा. See also at this point of time it's very important to tell you कि women are born with eggs, they don't make eggs. जब हम अपनी माँ के यूट्रस में होते हैं तो हमारे एग्स हमको दे दिए जाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, मतलब ये बोलने का ग्रॉस स्टाइल है. बट वी डोंट मेक न्यू एग्स, ओके, वी यूज व्हाट इज गिवन टू अस. तो हम जो 11वें साल में पीरियड आ गया, अब हम इस साल से हर महीना कुछ चंद अंडे बढ़ते हैं, इनमें से एक एग जो है रेडी होता है फॉर एवरी मंथ फॉर अ पोटेंशियल प्रेगनेंसी. सी व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई डोंट नो वेयर दिस इज लाइक रिवाइंडिंग बैक द होल थिंग, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल का उद्देश्य क्या है? भगवान ने पीरियड्स क्यों बनाए? क्योंकि हर महीना नेचर एक पोटेंशियल प्रेगनेंसी एक औरत के लिए प्लान करती है, फिर चाहे लड़की 11 साल की ही क्यों ना. देखो प्रेगनेंसी हो ना हो एक अलग बात है, ठीक है, बट नेचर प्लान्स इट फॉर यू, इट डज इट्स जॉब. सो एवरी मंथ देयर इज एन एग which is prepared, which is released at the right time. When it is released, there is fruitful sexual intercourse and a potential baby is made. Then this baby finally crawls and reaches inside the uterus, wherein this baby will stay for 9 months and will use this menstrual blood to get nutrition. That's why menses is deposited. No, the menstrual blood. The उद्देश्य है कि in the event of this month being a fruitful month, in terms of any woman getting pregnant and the baby reaching inside the uterus, the baby quickly latches on to this menstrual blood that the mother has collected that day. And that's why you don't get the period when you are pregnant. You don't throw it out. Why don't you throw it out? जो चीज 11वें साल से आ गई और हर इवेंट में आ गई, फैमिली ट्रिप पे आई, गोवा ट्रिप पे आई, किसी की शादी की डेट थी तो आया, डॉक्टर प्लीज कुछ करो, मेरी डेट है शादी वाले दिन, मेरे को नहीं चाहिए पीरियड्स. बिकॉज एवरी वुमन नो उसकी वो तो आना ही. वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में पीरियड नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? बिकॉज
the whole inner area is now converted to the nourishing state for the baby. Right. You can say all babies are made from their mother's menstrual blood. You from yours, me from mine. So it's something like that. Got it. Now, in this month, if this event did not happen, pregnancy, then this blood undergoes a change. It's now maybe some kind of a waste. So this needs to be flushed out. And this being inefficient, this mechanism, maybe this disease develops. Got your point. One of the ways. Right. But आपने बोला अभी के the first thing, like someone who actually is like important है for moms to understand कि ये periods को basic बंद करना, right? तो उसको बंद करने के लिए naturally you have like allopathic options only. I'm assuming, right? Yes. So what are those options? किया जाता तो meaning to reduce or the frequency reduce करती जाती है. साल में 12 महीने होते हैं. Right. तो now we'll give her medication कि भाई इसको 3 बार periods आए. तो जितनी बार कम आएगा उतना कम aggression disease का दिखेगा. Plus of course I at least welcome all other therapies जो उसको एक better state में like the you know exercise, maybe even therapy as of psychotherapy, because these girls when they come to know they're fighting a chronic disease, it has huge element of impact on their mind as well. So every doctor caring for endometriosis needs to know that in the team there should be the primary specialist, the one who's generally the surgeon. Then you have your parallel colleagues, like you have your colorectal colleague, the urological colleague, etc., who help you deal with the disease if it's spread to the deeper areas. Then you have your nutritionist, you have your physiotherapist, then you have your therapist in terms of psychotherapy. Understood. And of course, if the lady wants to also side by side, let's say try some homeopathy or something, why not? I mean, since there is no known full treatment for it, everything holistically should be but done. This allopathy के जो options हैं, मतलब वो options में I'm assuming that things like birth control pills, all of these are ones जो administered, which are used, which must be used, right? Do they have like a long-term side effects? Yes. They do. Yes. But then wherever you speak of medication, you have to weigh the benefit of taking the drug versus the disadvantages of not taking the drug, which outweighs. So in these women, the disadvantages or the complications of the drug use are not really at all in comparison to the problems that she will get if the disease advances inside. So it's like, so it just progresses and progresses. Got like cancer. Because normally, like jo perception, and which probably might be right, again because I'm a guy, maybe my understanding might be a little different, or I might not, इतना मुझे शायद पता नहीं होगा, but of course I think most men understand it, is that हमेशा एक बात जो हमेशा बोली जाती है to normally women is to avoid like a lot of these like eye pills and XYZ, which are, I mean those are emergency contraceptives, but ऐसे जो birth control pills and all होते हैं तो usually they tend to have an impact on your fertility. So no. Not fertility. Here, see, there is a difference. So you have to see what you are fighting. You're fighting endometriosis. Let me tell you, 50% of women sitting outside a test tube baby center are having this problem. The rest 50% will have other problems. You know, maybe the semen is not good. Maybe there's a fibroid. Maybe the tube is choked or blocked, whatever. So, मतलब आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, सब फर्टाइल या इनफर्टाइल पॉपुलेशन को. आधा तो एंडोमेट्रियोसिस है और बाकी का बचा कुचा सब इस साइड, इस विंग में. Got it. So taking the birth control here in terms of controlling your period is actually safeguarding your fertility here. Got it. ठीक है. अब birth control as such, I don't want to spread this message also कि birth control causes subfertility. It does not. Otherwise, trillions, the science won't allow it as a method of birth control. Yes, if a woman takes chronic birth control pills, for her to resume her fertility, it may take a couple of months. Got it. Okay. Birth control pills have their disadvantages and let's say side effects. So you may gain weight,
you may, and it is contraindicated in certain people, like for example, if you have a cardiovascular disorder, your blood clots easily. Yes. So they can increase your clotting tendency. Mm. Okay, they can increase the risk of breast cancer if you have a strong family history. But then the thing is, otherwise birth control pills, especially the newer lower dose ones, are safe. Safe, okay. And unfortunately, or whatever you want to say, they are needed for this condition. Got you. Okay, they're needed for many conditions, other conditions also, but this is one of the conditions wherein you have to this thing. Interestingly, now science has advanced, and there is a drug which is a non-hormone drug, and there are many drugs which are now being tried and still under research that are coming soon. One of them in the UK is now in the last trial, dichloroacetate karke hai. Okay. So nowadays, they are identifying even non-hormonal drugs which could work. Okay. Let's see. So ये fertility के बारे में of course I want to talk, but before that actually एक कभी आपने बात की ना, उससे मेरे दिमाग में एक question आया, is that often ये symptoms के time पे women do tend to put on weight and XYZ, जो एक also काफी common condition होता है usually when people have PCOD and PCOS. Yeah. You know? Yeah. So how is it different from PCOD, PCOS to endo? Or is it related? Weight gain you're talking about? Yes, weight gain. So both are totally different. Endo is commoner in leaner women. I mean, read data, read statistics. Endo women are generally, I mean not generally, but statistics suggests that these women are lean in general. Okay. PCOD is of two types. There is this lean PCOD and there is this obese PCOD. Now, PCOD is a state of hormonal dysfunction in which every month that egg doesn't get released. So there is no ovulation. In medical lingo, we call it anovulation. Got it. ठीक है, वो एक अलग कहानी. We are not discussing that. Right. In endo, if you see a woman gain weight due to endo, it could probably be because of her natural genetic state to gain weight, because much of it is hereditary also. The second thing is because of lot of pain, they don't exercise. So some amount of physical exercise is needed for everyone, especially after a certain age, you know, the midlife crisis. 35-40 के बाद तो सबका पेट बाहर आता है, औरतों का आता है, आदमियों का आता है, ठीक है. तो exercise has to go, and plus because of constant pain, sometimes they are on antidepressants. So antidepressants sometimes will cause huge amount of weight. They have the side effect of weight gain. और chronic use of hormones, और यही आप कह लीजिए जो लोग weight gain हो रहे हैं जिनको endo से, even this woman, if she manages her life well, weight can be managed. Control, okay. The problem is, see, and it's not endo. Problem is कोई भी weight gain कर लेना तो उसको कम करना तो एक मुझे लगा आप बोलोगे कि excuse चाहिए कि मुझे ये problem है, that's the reason why I'm doing it. As people who are on the higher side of weight, it's an effort. I know, I can imagine. वो तो फिर एक बार हो जाता है ना वेट गेन, तो उसको उतारना तो फिर उसके लिए एफर्ट लगता है, हर तरह से फिर अटैक करना पड़ता है. द राइट डाइट, द राइट फास्टिंग विंडो, द राइट स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट. राइट, ओके. नाउ फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपने बोला, बिकॉज यू मेंशन कि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑफ कोर्स फर्टिलिटी, what impact does it do when it comes to someone who's really looking to conceive or looking to be fertile? Huge impact, because see, there are now various ways in which fertility is affected. Pehla, let's see the various ways. Pehla, because a huge part of the disease affects the ovary. In fact, the ovarian cyst is the commonest manifestation. It's so now there is a cyst in the ovary, meaning which there is a collection of this blood-like tissue. This blood is rich in damaging chemicals, let's put it like that. So it bathes the eggs, the environment of the eggs, where the house of the egg, the nest, that is the ovary. So as such, women with endometriosis are prone to have a lower quality of their eggs. So even if you don't give any treatment or you don't operate, women with endometriosis may have lower
quality of eggs. So that is one way. The second thing is also, at this point, before I forget, surgery also has the potential to impact the egg count and quality, because when you operate on the ovary, the surgery itself has a slight potential to lower your. Is that the endosurgery? Endosurgery. Okay. Yeah? Because when you peel out the cyst, as a natural consequence, the eggs which are lying in close proximity also get the effect of the surgery. So it's like collateral damage. It's a collateral, but you need to do it. If it's a large cyst, you need to remove it. Right. So disease निकालना जरूरी है. So the second way in which it damages, so one is the impact on the ovary. The second thing is endometriosis में ऐसा होता है कि अंदर के सब रास्ते चिपक जाते हैं एक दूसरे से. हम इसको मेडिकल की लैंग्वेज में adhesions बोलते हैं, derived from the word adhesive. Okay. So adhesions क्यों बनते हैं जब अंदर blood जमते जाओ? Blood basically, for a layman to understand, acts like Fevicol. Yeah, it actually when it comes, yes, it is very sticky substance. And atmosphere के साथ it becomes immediately hard. आप कभी उंगली में चोट लगे, आप 5 मिनट दबाओ, आपको ऐसा थोड़ा रिमूव करने में 5 मिनट बाद खुद ही फ्रिक्शन फील होगा. ठीक है. तो जब ये महीना दर महीना, साल दर साल ये ब्लड और इसके प्रोडक्ट्स जमते हैं, साथ में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं उसको एक्चुअली इन एन अटेम्प्ट ऑफ द बॉडी टू फाइट इट, तो देयर आर एरियाज व्हिच, सो द एरियाज गेट स्टक टू ईच अदर. So the freedom of the internal state of the body is lost. Like एक हर सिस्टम भले ही अंदर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, पर एक ग्लाइडेबल या स्लाइडेबल कंडीशन में है. जब सब चीज के अंदर ब्लड जमते रहेगा, तो द फेलोपियन ट्यूब विल लाइक काइंड ऑफ टर्न अराउंड, विल गेट स्टक टू द ओवरी, इट विल फॉर्म लाइक अ बॉल, यू नो, एंड यू फॉर्म दीज बैंड्स ऑफ एडहेजन्स. हम इनको एडहेजन बोलते हैं, आप इसको हिंदी में समझ जाले जैसा समझ सकते हैं. It's like mechanical parts में रस्ट लगना शुरू होता है, so they don't, like the clogs don't work properly. So it's basically like a cobweb like situation. सब ऐसे तार बनने लगते हैं, जो like if you know, अगर फेविकॉल को खींचोगे तो ऐसे तार जैसे खींचेगी, तो वो वैसे अंदर तार जैसे, जाला बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एडहेजन्स बोलते हैं. तो ऐसे सारा एरिया एक दूसरे से, you know, the tube, the fallopian tube, which actually sucks the egg and causes the movement of the sperm towards itself, that becomes kind of all, you know, restricted, entwined and पूरा ऐसा बन जाता है. So because of adhesions, the movement, the internal movement of the body organs and the way the mechanics of the reproduction gets disturbed, you can say that. Second major cause of subfertility, maybe it's a painful intercourse. So अभी जब वो तो शुरुआत है प्रेगनेंसी की, तो वो भी एक होता है. Plus the uterus gets affected. This is called as adenomyosis. Okay. So we were speaking on that word. So when the uterine walls, blood deposits and tissue goes here, they kind of thicken up. This is called as adenomyosis. इसमें क्या होता है? The elasticity of the uterus gets reduced. Normally the uterus is a very elastic organ. 9 महीना वो बच्चे को रखता है. If you see a 9-month pregnant lady walk on the road, आप क्या, छोटा बच्चा भी कहेगा आंटी इज प्रेग्नेंट. ठीक है. Because her belly becomes so huge. So basically the wall of the uterus is like a hugely elastic muscle. Twins, triplets, सब रह जाते हैं ना, मालूम है. So now when the blood permeates into the walls of the uterus, there is a reaction and there is scarring all inside. So scarring मतलब टिश्यू टाइट हो जाती है, टिश्यू का वाटर कंटेंट कम हो जाता है, टिश्यू की इलास्टिसिटी कम हो जाती है. अब यही यूट्रस जो कि मे बी नेचर डिजाइन लाइक अ सॉफ्ट स्क्विशी लेमन, कि हर महीने लेमन को जूस आउट करना है, यही नारियल बन जाता है. सो द कोकोनट यूट्रस इज द एडिनोमायोसिस. Okay. So now when it becomes so stiff, it's a cause of major period pain. It's also a cause of subfertility, because the बच्चा will not really stay well in a very rigid environment or a very rigid. So ये second element है. So there are many reasons for सबफर्टिलिटी. ये जो सिस्ट जो आपने बोला जो ओवरीज में फॉर्म होते हैं, नाउ इनफर्टिलिटी के लिए ये कॉमन कॉज होता है लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन में, राइट? सो मोस्ट ऑफ दो सिस्ट जो बनते हैं ओवरीज में, वो एंडो की वजह से बनते हैं या ये कंडीशन की वजह से बनते हैं, कि इट्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ सम अदर कंडीशन? सिस्ट इज अ जेनेरिक वर्ड, इट्स अ जनरल वर्ड. सिस्ट कहीं भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है. ठीक है. सिस्ट तो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है ऐसी कोई गांठ जो बलून जैसी है, जिसके अंदर कोई लिक्विड कंटेंट है, तरल पदार्थ है. ठीक है. अब ये ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, कोई सीरस फ्लूइड, बॉडी का दूसरा कोई
फ्लूइड हो सकता है। एंडोसिस्ट तब बोला जाता है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट तब बोला, इसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं, एक बोलचाल की लिंगो में इसको चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है। चॉकलेट बिकॉज ओल्ड ब्लड लुक्स लाइक दैट हर्शीज सिरप, यू नो, सो व्हेन वी टेक इट आउट इन सर्जरी इट एक्चुअली लुक्स लाइक दैट जो वैनिला आइसक्रीम पर एग्जैक्टली, सो वो वैसा दिखता है। सो दैट बिकॉज ऑफ द क्रॉनिसिटी, पुराना ब्लड है ना, तो उसका कलर ब्राउन, chocolate brown हो जाता है। So if you read about it, you will see chocolate cyst, chocolate cyst. So many people call it as the chocolate cyst. Okay. So endometriosis की cyst इस बीमारी की वजह से जो यहाँ अब इस बार जमा हुआ है, ये endometriotic cyst है। बहुत सारे ओवरी के दूसरी डिजीजेस में अलग टाइप की cysts बनती हैं, जो एक्चुअल ट्यूमर्स ऑफ द कोई ट्यूमर होते हैं ओवरीज में, which are in a cyst form. So, ये तो कभी कभी जिनको बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं, कभी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, कैंसर। सिस्ट तो एक जेनेरिक वर्ड है। Okay. यहाँ पर ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। Understood. Because मैं just try to understand करने की कोशिश कर रहा था कि normally when infertility होती है with women, so always जब भी gynacs के पास they visit, then the most common cyst हो गया। Cyst हो गया. So I was trying to understand, is that also the endocyst or is it? May also harm fertility, okay, but this is like specific. Understood. Okay. Now, painful intercourse and HPV also I kind of just wanted to touch upon, because is there also some relation between these as well? Because I know HPV is of course a sexually transmitted disease. Yeah, so HPV can be a precursor. The HPV infection can be a precursor for problems related to the cervix. Cervix is the mouth of the uterus. Right. तो uterus का ऊपर का part uterus हुआ body, और नीचे द्वार होता है जिसे माउथ बोलते हैं, जो खुलता है डिलीवरी के टाइम। यहाँ का जो इन्फेक्शन है, ये ऐसा साइंस ने पता किया है कि ये वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दी एचपीवी इन्फेक्शन जो होता है। अगर ये सालों तक परसिस्ट करे तो दीज वुमेन आफ्टर 8 to 10 years में मैनिफेस्ट प्री कैंसर एंड दिस विच में प्रोग्रेस टू cancer. This has nothing to do with some bacterial dysbiosis in the gut. So there is evidence to show that if we are talking of microorganisms, it's not the HPV virus. HPV is a virus. Right. But as I told you, ki one of the newer breakthroughs that has come up is ki in औरतों की gut में there is a dysbiosis. So they have come up now. Newer research shows कि कुछ bacterial toxins, स्पेशली एक का नाम MPS है। सो ये टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन जो है, ये हायर लेवल्स पे होता है, जिससे ये डिजीज इंस्टिगेट हो सकती है प्रॉबेबली, बट नॉट सो इन फ्यूचर प्रॉब्ली इफ देयर इज एन एंटीबायोटिक और समथिंग, आई डोंट नो, एंड दिस इज जस्ट अ रैंडम थॉट, एंड देन प्लीज डोंट स्टार्ट सर्चिंग इट, बट मे बी दैट कुड बी इम्प्लिकेटेड, बट डेफिनेटली नॉट HPV। गॉट इट। How is ये endo और adenomyosis जो आपने बोला, how is it different from, आपने, I think you use the term fibroids as well. So fibroids I have an idea about, मुझे थोड़ा idea है fibroids के बारे में, तो ये कैसे different होते हैं? So fibroid is a true tumor of the uterus. Fibroid में क्या होता है ना, uterus is made up of muscles, very nice stretchable, very strong muscle. So uterus की muscles का ही कोई point फ्लिप कर जाता है, उसकी जेनेटिक्स या कह लीजिए उसकी ग्रोथ वहां पर आ जाती है, एंड दैट टर्न्स इनटू अ बॉल, एंड दिस बॉल लाइक ट्यूमर, दिस सेल प्रोलिफरेशन दैट हैपेंस, सेल ग्रोथ ऑफ दैट मसल टिश्यू दैट हैपेंस मेक्स अ मसल ट्यूमर। तो फाइब्रॉइड उसी तत्व का बना है जिस तत्व की यूट्रस की दीवार बनी है। ये यूट्रस की दीवार से ही बनता है, उगता है, जुड़ता है, whatever you want to say. Fibroids can happen anywhere in the uterus. So uterus is like a room. It has a roof, it has walls all around. Then it has this inner space to keep your baby, right? So wall के कहीं भी एस्पेक्ट से फाइब्रॉइड हो सकता है, छत पे आए, जैसे हम फंडस कहते हैं, आगे की दीवार, पीछे की दीवार, साइड की दीवार, दीवार की आउटर लेयर से ग्रो कर सकता है when it may grow and occupy space of the pelvis, दीवार की अंदरूनी लेयर से, मिडिल लेयर से, कहीं से भी। These are like proper tumors. Adenomyosis is when the menstrual tissue seeps inside, like blood tissue seeps, like बरसात and hardens inside. घर के रूम में जब मुंबई वाले सबको पता है, तो जब भारी बरसात होती है तो घर के वॉल्स के क्रेवाइसेस से घर में पानी के पैचेस नहीं आ जाते। सो सिमिलरली अब ये भी वही है, आप समझ लीजिए कि ये जो ब्लड है ये सीप कर जाता है इनटू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। यहाँ फिर क्लॉट्स और मेंस्ट्रुअल टिश्यू जमते जाता है, उसका रिएक्शन होता है,
स्कारिंग होती है, यूट्रस की दीवार थिकर, टाइटर, नॉन रेजिलियंट, नॉन कंप्लायंट, टेक्सचर चेंज हो जाता है, Right. इलास्टिसिटी खत्म, Got it. है ना, ब्रिटल हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं. Okay. Now let's talk about treatments. Okay. What are the type of treatments जो एक endometriosis condition में woman can take? So treatment basically depends upon amalgamation of three things: stage, fertility, symptom score. How bad is she? Is she miserable with the pain, not getting up, and you're not able to do anything? So all the three have to be amalgamated. Right. For very early or very simple diseases, like for example, if a young girl, let's take 2 or 3 examples to think about this. So let's say if there is this 19-year-old who comes with a small cyst, just a small cyst, let's say less than a 3 centimeter cyst, 3 centimeter, when on MRI, evaluated on MRI, there is no, all deeper organs are just in place. She's not planning a pregnancy. अभी तो 18 साल की है, क्या प्रेगनेंसी करेगी? So then we may just give her the pill to help control her periods and watch whether the disease, the cyst shrinks, so to say. We keep her under close surveillance. Okay, we don't let her just be. So we keep her on, maybe, we keep monitoring Periodically her on monitor the size of the cyst and also on her symptoms. So at any point of time, if we feel कि अच्छा अभी तो इसको खाली हल्का फुल्का पीरियड में पेन था, अब ये क्यों कह रही कॉन्स्टिपेशन है, और immediately we take a call and readdress it in case that happens. So basically, now let's say the same girl, now she's 19, unfortunately has intestine disease, maybe nerve disease. There's no choice for her but to get operated. So when I know now my patient has a disease which is intuitively aggressive, after surgery I'll take a lot of care to see to it that she achieves her targets of a good quality life as well as fertility on time. So I'll gently counsel her for fertility also. I mean, you can't force it, but you have to tell her, and maybe offer her even treatments like egg freezing and all if she had a large cyst or something like that, something that impacted the ovary. And I will put her on suppression, yes. Now, again, there is a lot of debate even amongst endometriosis specialists whether the suppression should be given or just should you let them be after surgery. Each doctor has his or her way of an experience. So, in my experience, if it's the deep endometriosis, meaning which on the other organs, then a good clearance surgery does not actually need much of a suppression. तो एक बार आपने हटा दी तो इतना जल्दी कोई रिलैप्स होता नहीं. बट इफ इट्स डिजीज ऑन दी ओवरी, बार बार सिस्ट बनने की इनकी टेंडेंसी होती है, तो आई विल प्रेफर टू मेडिकेट हर इफ शी हैज मोर ऑफ द ओवेरियन एलिमेंट ऑफ द disease. Sometimes we, even in younger girls and all, we try to prevent. If she already has an adenomyosis, then we may give her medical treatment to prevent the uterus from becoming more rigider and more bigger in size. So there are a lot of things available. Now, same girl, let's say she's 30, just married and wants a baby. So we will then evaluate. I will, before even attempting a surgery, even if the patient needs a surgery, I will loop her up with my fertility team. So I will send her to doctors in my team who will evaluate her fertility, her husband's sperm, everything. They sometimes give us valuable feedbacks. They will tell us कि अच्छा डॉक्टर शिंजिनी आप दोनों बाजू बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट्स हैं, तो आप इसको इतना निकालोगे तो ओवेरियन डैमेज होने की भी चांस है, एग डैमेज, तो आप ऐसा करिए सर्जरी के बाद पीआरपी इंजेक्शन डाल दीजिए. पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. सो इट्स दैट इंजेक्शन हेल्प्स टू बूस्ट व्हाटएवर रिमेनिंग, मे हेल्प टू बूस्ट. दिस इज स्टिल एक्सपेरिमेंटल बट वर्थ डूइंग. So there are a lot of fine nuances in each case. For example, if a young 30-year-old married lady has a huge cyst but the other ovary is normal, or and if the IVF specialist finds that the other ovary can be harvested upon, so we may freeze the eggs prior to performing the surgery, so as to keep them like a saving bank account. ठीक है, तो वो भी so there is so one line. Endometriosis treatment has to be tailored. Okay, you cannot say कि ये कोई टाइफाइड का बुखार नहीं है कि यहाँ वही दवा लगेगी सबको वही लगेगी, ऐसे नहीं होता है. ठीक है,
tailored to the specific needs of the lady, Right. which means her stage, her desire, whatever she desires. This is the new generation, for God's sake. यहाँ कईयों को बच्चे ही नहीं चाहिए होते. So there is this young couple who will come to me, doctor, please don't bother about my fertility. I'm just not wanting. We've decided not to have children. ऐसे वाले भी आते हैं, तो उनके लिए फिर एक, then I may put her on a permanent comment. Maybe I'll put her intrauterine device called Mirena. Right. So we tailor it. And then of course the third thing in tailoring is our symptom score. First is that, no, because see, quality of life is the most important thing. If you are in pain, how do you क्या ही live your enjoy life? करोगे life, right? But so first, also, sorry for the interruption. One last word. So there is a radical treatment also. Like for example, let's say if the woman is 40ish, 40 plus, achieved her fertility goal, or maybe not desirous, whatever, and the disease is indeed very bad, then we remove the uterus and or the ovaries in order to decrease the recurrence. So removal of the uterus with both the ovaries, as well as removal of all the disease that was found, the deep disease, will almost be a permanent cure. But again, it comes with its problems, like, because if you remove the ovaries, you get a surgical menopause, meaning which आपके hormones permanently खत्म. Hormones, although play a huge role in the implication of the disease, but they are like a necessary evil. So they also give you your femininity, your womanhood, your sexuality, your bone strength, your heart health. Everything is in a way related to the hormones. So you have to take the right call. कि किस एज में कर रही हूँ, अगर मैं परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफर कर रही हूँ तो मैं किस एज में कर रही हूँ, कितनी डिजीज है, और आगे मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ टू हेल्प हर फाइट. Got it. Okay. So I'm assuming कि पहला of course medication है and दूसरा in the case where require होता है तभी surgery करते हैं. So naturally this is an invasive surgery. Yes. Okay. So is there any amount of risk involve होती है अगर आप ये surgery करेंगे किसी और चीजों पे या? So see, surgery for those cases wherein it is deemed mandatory is mandatory. Surgery in the modern era, आज की era में, is not the open surgery. So इसमें कोई पेट नहीं खोल रहा है. Okay. ठीक है. All surgery for endometriosis, with the only exception of endometriosis in rare locations. Let's say किसी को पेट की दीवार में आ जाता है, scars में आ जाता है पुराने. मान लीजिए किसी की अपेंडिक्स की सर्जरी हुई या सिजेरियन हुआ, किसी की बेबी की, तो जब ब्लड वो स्कार एरिया में एब्डोमिनल वॉल में अटक जाता है, तब फिर डॉक्टर उसको दूरबीन से कैसे करेगा ना, लैप्रोस्कोपी से कैसे करेगा उसको, फिर वो एरिया तो एब्डोमिनल वॉल की काटनी पड़ेगी, तो वो काट के होती है वो सर्जरी. किसी की इंग्वाइनल एरिया जो ग्रोइन एरिया है उस फोल्ड में रेयरली आ जाता है. तो ये एक्सेप्ट फॉर दीज वेरी रेयर लोकेशंस, every endometriosis surgery has to be through a minimally invasive route. Now, minimally invasive route can be of two types. It can be through laparoscopy or through robotics, which are basically the same. Basically, the key word is minimally invasive surgery. So, you make small holes, you go inside, there is a huge magnification camera like how we're shooting here. So, उसमें आपको disease जो minuscule disease है, छोटी सी छोटी डिजीज कई गुना बेहतर दिखती. देयर इज मोर प्रिसिशन, देयर इज करेक्ट ट्रीटमेंट, एंड देयर इज दिस एबिलिटी टू रिमूव डिजीज फ्रॉम इवन रिमोट एरियाज एंड लोकेशंस वेयर द कैमरा विल reach while the bulky fingers of the surgeon may not. Right. So it's kind of like जैसे keyhole surgery जैसे हम बोलते हैं. Keyhole. Minimally invasive surgery is the keyhole surgery. It is a synonym, and this surgery is of broadly two types, either the laparoscopy or the robotics. Both have equal outcomes. There is no dictum कि ये कराई तो better या वो. It's basically dependent upon the skill of the surgeon. Got it. Okay. Now, recovery period जो होता है जब भी आप ये treatment करते हैं, तो what is that window like? So, on a broader perspective, because it's a minimally invasive surgery, recovery is quite fast. In terms, if you mean recovery by pain, कितना होगा, पेन कब कम हो जाएगा सर्जरी के बाद, so it's a very comfortable surgery because जब पेट ही नहीं कटता, तो उतना कोई खास दर्द वाली सर्जरी नहीं होती. स्कारिंग कम होती है, कॉस्मेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्विकली पेशेंट खड़े हो जाता है, जल्दी उठता है, जल्दी एम्ब्यूलेट होता है, इसको एम्ब्यूलेशन बोलते हैं, मोबिलाइज होता है जल्दी. तो उस तरह से जो रिकवरी है वो फास्टर होती है.
इंटरनल रिकवरी बराबर होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली इंटेस्टाइन सर्जरी है, तो अब जो इंटेस्टाइन सर्जरी में जो एक डाइजेशन प्रोसेस को रीस्टार्ट करने में, और जो एक जैसे फर्स्ट डे सॉफ्ट लिक्विड्स दिए, फिर सॉफ्ट डाइट दी, तो और कुछ दिन तक थोड़ा सा मोशंस को सॉफ्ट रखने की दवाइयाँ, या जो परहेज होता है खाने का, तो वो तो जो है वो है नेचुरल कोर्स ऑफ हाँ, एक्शन है। वो बट उसके ऊपर है। फिर ये ट्रीटमेंट करने के बाद लाइक वंस यू डू द सर्जरी, तो उसके बाद में what is the difference that a patient or a woman can experience in terms of her condition? Yeah, so she gets relieved of. So we address every area. That is the point why, see, this surgery should only and only be attempted by people who are trained for the disease. I'm sorry to say this, but a lot of colleagues will accept patients of stage 3, stage 4 endometriosis, but will just address the cyst. Cyst, like anyone can do. It's not about the cyst, please. Cyst is the tip of the iceberg. Addressing the cyst. Right. But होता क्या दुनिया को ना वो cyst word जो ऐसा आप भी पूछ रहे थे, cyst. So cyst is like a scare for Big them. thing, It's actually not the cyst. It's all your vital organs inside. It's the deep part of the disease. The ability to operate on pelvic organs outside the reproductive system, apart from the reproductive system, is what is needed, which only people who are trained for the disease and who work with the team of this thing can achieve. If your first surgery is screwed up in terms of saying अगर तुम्हारी पहली surgery incomplete है, you will come back with same problem, bad recurrence. And the second surgery is harder for the next surgeon because previous surgery का भी scar tissue अंदर आता है. So it is said that the first surgery should be the most radical in terms of disease removal, yet conservative towards her fertility. So it's like you have to achieve an ergonomics between radicality in disease removal. मतलब पूरी तरह से कोशिश यही होती है कि पूरी डिजीज रिमूव करी जाए, बट एट द सेम टाइम उस लड़की की फर्टिलिटी ना डैमेज हो, व्हिच इज समटाइम्स. कितना फर्क पड़ता है इस सिनेरियो में? लाइक गिव यू अ सिनेरियो लाइक के से 28-30 ईयर ओल्ड टुडे, बिकॉज दे से दैट 30-32 इज द फर्टाइल एज, उसके बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नेचुरली. सो से समवन एट 28-30, अगर वो ये एंडो सर्जरी करे, and what are the chances of their fertility improving or staying intact or getting better ये surgery करने के बाद? So if the patient does not have an ovarian disease, much of ovarian involvement, but has the deep endometriosis, with just the surgical correction of that, she improves fertility and may conceive naturally. I mean, natural, without taking any treatment. If she has minimal disease of the ovary and all, also we allow her to let's say 6 months to try laterally, or maybe even a year, but under surveillance. Okay. However, if the impact on the ovary has been major, or on the uterus, whatever, then we actually don't ask them to wait too much for a natural conception, because each period can be a recurrence. So we ask them to go ahead with the treatment for pregnancy ASAP. See, statistics suggests that a healthy couple with a good frequency of sexual intercourse may take up to 2 years to conceive. Right. This endo girl will get 24 periods in 2 years. So you don't wait for natural too much. Right. And you wait, but with a close surveillance. Got it. What is the difference between, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, इससे मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली आई थिंक, एंड अगेन आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो, आजकल की लाइफस्टाइल में यूजुअली फर्टिलिटी इज अ चैलेंज, राइट? बिकॉज स्पेशली पीपल आर गेटिंग मैरिड लेटर. Men also, because of उनकी जो lifestyle है, there is always sperm count is as they say is not enough, or the quality of sperms are like not that great. At the same time, जो women है, because they also getting married late, so their window in terms of like being healthy to conceive वो भी मतलब थोड़ा सा I think late हो रहा है और short window होते जा रहा है. So from that perspective, अगर normal जो आप fertility के
ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हैं और उसके कंपैरिजन में समवन हु इज लाइक अ एंडो पेशेंट, तो मतलब वो डिफरेंस कितना बड़ा है? Because normally line of treatment is similar, right? Like where you do a lot of tests, then you try to do these. I mean, I think there are injections, and then the last case is IVF, as they say. So I wanted to understand कि ये difference मतलब कैसा है? I think because I think viewers के दिमाग में भी ये आएगा, I'm sure. So endometriosis की पेशेंट है तो उसको अपनी फर्टिलिटी ग्रैब करना ही चाहिए अगर इफ शी वांट्स अ चाइल्ड, ओके, एंड इस पर बहुत ज्यादा टाइम उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर नेचुरली भी ट्राई कर रही है तो नेचुरली डज नॉट मीन यू डोंट कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर। जो आपका फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाने का ये मतलब नहीं होता कि वो पकड़ के टेस्ट ट्यूब बेबी करवा देगा या आईवीएफ करवा देगा, सर, सो कॉल्ड आईवीएफ। अरे देयर आर सो मेनी थिंग्स, द डॉक्टर विल गाइड यू कि भाई तुम्हारा ओव्यूलेशन टाइम कब है। नेचुरली भी ट्राई करो तो ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए ना। हाउ डू यू नो व्हेन? सो ठीक है, यू हैव दोस फोन एप्स, यू हैव दोस urine tests to detect ovulation and all, but nevertheless for an endo woman it is highly advisable to stay in sync with your doctor. She will guide you to which are your good days to conceive and all. Even if you are trying naturally, just be under someone's umbrella, because तभी आपको वो हासिल भी ठीक से होगा। और बहुत टाइम आपको ना वो फ्लिप ओवर पॉइंट एज अ पेशेंट नहीं समझ में आता है कि अब थिंग्स आर वर्सनिंग या नाउ देन, फिर कभी कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होता है? अगर एक्स स्कोर बहुत लो हो गया, इसको हम एक बहुत सारे टेस्ट से मेजर करते हैं कि AMH होता है, एक एंट्रल फॉलिकल काउंट होता है, हजारों चीजें होती हैं, ये सब लोअर एक लिमिट से ज्यादा हो गए, तब वो बेचारा टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपर्ट कितना भी एक्सपर्ट हो, वो आपके एग्स, उस लेडी के एग्स नहीं यूज कर पाएगा। वो फिर देन he'll से सॉरी, लेट्स यूज अ डोनर एग। तो अब देखो, तोड़ तो साइंस में हर चीज का आ गया, बट क्या चाहिए आपको वो भी है ना। यू वांट टू यूज योर एग्स, यू बेटर बी अवेयर कि मैंने शुरुआत में अंडे तो कोई डाल नहीं सकता, कोई ट्रीटमेंट नहीं बना है कि आप एग इम्प्लांट कर दो किसी के। तो जब सीमित है कोई चीज, लिमिटेड है, तो यू नो इट्स गोना फिनिश, ठीक है। एज सच 35 के बाद एग काउंट कम हो जाती है इन द हेल्दीएस्ट ऑफ लेडीज, 40 के बाद तो हालात कुछ ही बचती है, ठीक है। तो वो तो इन जनरल पॉपुलेशन है, अभी तो पीपल गेट मैरिड आफ्टर 35, सो वो दैट्स व्हाई यू सी मोर एंड मोर ऑफ पीपल needing a test tube baby also, even if they are healthy. Got it. Okay. So normally endo की जो condition है, does that get better or cured after a pregnancy? Yeah, so see, basically pregnancy क्या है? Pregnancy एक प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट कंडीशन है। So मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो ईस्ट्रोजन होता है वो एक काइंड ऑफ कल्प्रिट है। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्टिव हार्मोन है, इट्स द रिलैक्सेशन हार्मोन। बहुत सारे पेशेंट्स में प्रोजेस्टेरोन रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए भी ये डिजीज डेवलप होती है। अब जब प्रेगनेंट ही हो गई तो प्रोजेस्टेरोन ही प्रोजेस्टेरोन है, आप सोचो। तो जो भी इर्द गिर्द गलत जगहों पर जो एंडोमेट्रियोसिस की टिश्यू डेवलप होती है, वो सब सबसाइड जैसी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योर तो वर्ड बिल्कुल गलत है, क्योर नहीं होता प्रेगनेंसी से डिजीज, बट कई बारी journey gets transformed. So pregnancy is a comfortable state for these women because इनको सब pain free जैसा हो जाता है। They like the pregnancy. Pregnancy also helps them achieve their target. वो भी बहुत जरूरी है, because कल को भगवान ना करे डिजीज बहुत प्रोग्रेसिव हो और रेडिकल ट्रीटमेंट लगे तो एक टारगेट अचीव तो हो गया, फिर कोई माइंड नहीं करता है। एक बार बहुत पेन है, बहुत डिजीज है, बच्चे होने का काम हो गया, तो पेशेंट खुद आ गया, मैम प्लीज गिव मी सम परमानेंट सोल्यूशन। तो वो भी फिर टेंशन नहीं होता कि अरे बच्चे नहीं है, कैसे इसको कुछ बता दें कि ये है। दूसरा ऐसा है कि प्रेगनेंसी के बाद कई लोगों की जर्नी चेंज हो जाती है, मे बी द डिजीज में नॉट सो, बट देन इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, विद द सेम सर्जिकल हैंड, इफ आई हैव ऑपरेटेड अ पेशेंट, सो द सेम सर्जिकल स्किल, ओके, इफ आई हैव ऑपरेटेड अ पेशेंट और बहुत अच्छी सर्जरी हुई एंड फटाफट प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेगनेंसी के बाद आई एम फॉलोइंग हर, कभी कभी 8-8, 10-10 साल द डिजीज स्टेज एट बे। कभी कभी विद द सेम सर्जन एंड द सेम सर्जिकल हैंड 1.5 साल का बच्चा लेकर आती है, मैम पीरियड पेन लास्ट 2 मंथ से फिर से हो गया, जरा देखो। सी इट्स अनप्रेडिक्टेबल, बट यस, प्रेगनेंसी इज समथिंग दैट helps or benefits should be achieved.
गॉट योर पॉइंट, ओके। सो ऑफ कोर्स अभी जैसा हमने पहले भी बात किया कि ये काफी पर्टिनेंट है, लाइक यू सेड 1 out of 9 गर्ल्स हैव दिस चैलेंज, एंड तो ये ट्रीटमेंट्स तो काफी टाइम से चलती आ रही हैं। आज के डेट में मतलब व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट और एनीथिंग व्हिच हैज हैपेंड, न्यू डेवलपमेंट जैसा हम कहते हैं ये एंडो में, वो क्या हुआ है? तो बहुत सारी रिसर्च चल रही है एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, मे बी 1 or 2 year ऑड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी एक रिसेंटली एक सलाइवरी टेस्ट, सलाइवा से सलाइवरी टेस्ट कंफर्म हुई है। इसको सलाइवरी mRNA टेस्ट कहा जाता है। सो ओनली हैव टू स्पिट आउट, ओके, मतलब ब्लड भी नहीं है ये ड्रॉ जो कर रहे हैं, एंड दिस इज सो कॉल्ड कॉन्फर्मेटरी फॉर द डिजीज। प्रॉब्लम ये है कि इवन कोई ऐसी ब्लड टेस्ट नहीं है जो इसका कॉन्फर्मेशन दे, खाली ये जो MRI और अल्ट्रासाउंड है इन्हीं के बेसिस पर हमको, और ऑफ कोर्स सिम्टम्स वगैरह पर डिपेंड करना पड़ता था। तो ये देखते हैं कैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज में अभी थोड़ी थोड़ी सी ट्रायल्स इसके लॉन्च हुए हैं। होपफुली दिस विल कम अप। कुछ एडवांसेस इमेजिंग मॉडलिटीज में हुए। फॉर एग्जांपल जब हम MRI करते हैं तो MRI में अंदर का जो स्कार टिश्यू होता है वो देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, और डीप एंडोमेट्रियोसिस जब होता है तो जब ब्लड अंदर धंसते जाता है तो स्कारिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी की अंदर की टिश्यूज जो जिनका वाटर कंटेंट एकदम कम हो जाए, जो ड्राई एंड ब्रिटल हो जाए, ऐसा स्कार वर्ड बेसिकली ये डिफाइन करता है। स्कार टिश्यू कितना है जिसको हम मेडिकल भाषा में फाइब्रोसिस बोलते हैं, ओके, ये डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब MRI में MRI इलास्टोग्राफी आ गई है जो इलास्टिसिटी ऑफ द टिश्यू डिटेक्ट करे, तो वो स्कारिंग डिटेक्ट करती है। सब नहीं कर रहे हैं बट सून इट विल बी देयर। इवन AI का यूज अब इन्वेस्टिगेट सारे जो हम मतलब सर्जन को MRI, अब MRI मैंने करवाया, अब ये ड्यूरिंग सर्जरी दिस विल टेल मी एग्जैक्टली ये लोकेशन, जैसे AI से सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको बताता है। यस यस। सो इंसिडेंटली वी आर वर्किंग ऑन विद सम, मतलब जो हमारी MRI स्पेशलिस्ट हैं वो उस पे कर रही हैं। सो यू नो यू गेट दैट इमेज ऑन व्हाइल यू आर ऑपरेटिंग की, ये जैसे नहीं आता 3D सुपर इम्पोज्ड का, कैसा दिख रहा होगा। कल को ये भी सारा AI जनरेटेड हो जाएगा, मतलब द सर्जन विल एक्चुअली गेट। अभी तो हमको वो प्लेट्स लगानी पड़ती है MRI की बड़ी बड़ी, फिर हम वो लाइट ऑन करके पीछे से ढूंढते हैं क्या है कहाँ है, अब वो एक्चुअल ये होगा। सो दीज आर रियल टाइम एडवांसेस दैट आर गोइंग ऑन। थेरेपी में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो डाइक्लोरो एसिडेट, मतलब नॉन हार्मोनल ड्रग्स, और बहुत सारी ऐसी न्यूअर ड्रग्स भी आ गई हैं जो पहले इंजेक्टेबल फॉर्मेट में देते थे, अब टैबलेट में अवेलेबल है। सो ये तो ये भी ब्रेक थ्रू है, ओलागोलिक्स वगैरह इनका नाम है। लेट्स सी एक टोटल एमैल्गमेशन में क्या होता है। सर्जरी तो वही है, मिनिमल एक्सेस रूट से ही है, और वही बेस्ट सर्जरी इसके लिए होती है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, एज इन लाइक डज होम्योपैथी हेल्प in so I have limited experience, I don't have, so but I feel कि क्या ही बुराई है उसको इनकलकेट करने में। मेरे को जब पेशेंट पूछता है तो मैं थम्स अप ही करती हूँ, ठीक है, बट ये जरूर बता देती हूँ कि देखो जो चीजों का इलाज जरूरी है, अगर प्रॉब्लम डीपर पार्ट्स में आ गई है तो प्लीज होम्योपैथी आप साथ साथ में लेते हो, लेकिन सर्जरी करवाओ, ठीक है। मे बी आप आपके होम्योपैथ को बोलिए कि फास्टर हीलिंग में सर्जरी के बाद, होम्योपैथी इज लाइक अ साइंस, यू नो, इट्स कॉल्ड एज द मैजिक ऑफ द मिनिमम, ठीक है। तो अब उसमें सूक्ष्मता से अगर वो एक्ट कर रही है तो उसको बोलो कि भाई आप फास्टर हीलिंग मेरी करवा देना, रिकरेंस प्रिवेंशन के लिए आप ले लो। लेकिन जो एरिया ब्लॉक हो गई है, जो पार्ट वाइटल ऑर्गन का डिजीज हो गया है, वो होम्योपैथी से कहीं गायब नहीं हो जाएगा। So this is like a physical disease, like a physical tumor. You can't just कोई मंत्र फूकने जैसा हो गया ये तो, मतलब फिर मंत्र भी फूको, why not? If you believe and do that also, but don't avoid the obvious. Obvious. That's got your point. Okay. Just to get a idea in terms of like, I think what is the, in case of the surgery भी अगर हो तो what is the range of expense that a user or a
patient is looking at, because मुझे लगता है काफी सारे लोग जो देख रहे होंगे उनको ये भी शायद थोड़ा सा दिमाग में रहता है, because not everybody is in a comfortable situation like. Yes, absolutely. So basically any minimally invasive surgery is a higher scale of surgery in terms of finances. जहाँ पर laparoscopy robotics आएगी तो by default the armamentarium is expensive. Okay, the instruments that are used. So the surgery cost goes up. Now again it depends on what is the stage of the disease. If we are dealing with stage 2 or disease wherein we don't need the expertise or the instruments to handle the intestine, etc., then the surgical costs goes down. If you have a stage 4 disease wherein you need to, so if it's an intestine disease, every time thodi intestine katte, there are various levels of surgery. If it's a superficial disease, we do something which is known as just scraping, or in medical lingo it's known as shaving. How you shave and you remove the disease. And sometimes we just remove a small patch which is called as disc removal. Sometimes you need to remove a segment of the intestine, that's called as segmental removal. So har kisi ka cost alag alag hota hai. The devices for these are expensive. They are known as staplers. Okay. So stapling devices are very expensive. So खाली अगर किसी का major news stapling device ही 50,000 की हो जाए. Only that device. I'm not talking of everything surrounding it. Anything. So on a scale, so if, and also as in, and where you get it done is, you go and get it done in a big corporate hospital. So this is like a level 6 surgery in a corporate hospital. Wow. Major, and Mumbai, major corporates in around level 6, level 7 surgeries. Again, it's a twin sharing room ki single room, but on an average it could go anywhere between 4 to 7 lakhs. Also sometimes. Same thing, we may cater at a lower hospital with the same surgery at a lower rate. We also sometimes talk to the company people who manufacture these instruments, and we run camps to give non-affording class the benefit. Got it. Okay. Great. Thank you so much, Dr. Shinjini. I think this was ये काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मतलब ऐसे टॉपिक और कंडीशन पे मतलब कितनी सारी चीजें लिंक्ड होती हैं, वो सोच पाना इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, स्पेशली फॉर मेन. मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई थिंक आई एम अमेज्ड दैट यू ब्रॉट दिस टॉपिक अप, बिकॉज जब मैं ओपीडी हैंडल करती हूँ तो पेशेंट तो कभी मतलब किसी को कुछ पता नहीं होता इसके बारे में. आई डोंट नो व्हाट गॉट यू इनटू दिस endometriosis word, but if you search you will find कि इसका बहुत बड़ा wave भी चल रहा है. there are now endometriosis foundations, there are groups in which women are discussed. So there is a lot of especially in the last 5 odd years there is a huge like how cancer awareness is there, breast cancer awareness, this awareness, that awareness. So abhi endo awareness, in fact March is celebrated as the endometriosis month. Okay. Yeah, but ये सब चीजें हमारी कंट्री में इतना परकुलेट थोड़ा धीरे हो रही हैं. But I hope कि No, I'm sure it will be, and that's why मतलब जब ये बात हम भी कर रहे थे तो मेरा आइडिया यही था कि इस हिसाब से हमारी बात हो कि अगर किसी को कुछ भी चाहिए एंडोमेट्रियोसिस के बारे में या इसके बारे में जानना है, तो देन they can actually learn from you, और इस conversation से they are able to benefit, so that we are able to cover all the topics. And also मुझे क्यों ऐसा लगता है, which is also surprising, because मुझे लगा था कि since fertility से भी ये काफी related होता है, so that's the reason why मुझे ऐसा लगा कि काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, but then I realized कि actually it's not something जो काफी लोगों को पता है. But मुझे ऐसा भी लगता है कि it's because I think in today's day and age people are like so busy with their own thing. मतलब they of course will trust your gynecologist or your doctor के वो बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जब तक वो उनको आगाह नहीं करेंगे इसके बारे में कि देखो एंडोमेट्रियोसिस का सिचुएशन या सिनेरियो है, सो देन दे विल नॉट सर्च. या आपको ऐसे, आई डोंट नो, अगर आपको भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पहले ही काफी सारी रिसर्च करके आते हैं? यस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एज आई टोल्ड यू, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द डिजीज इज द पेशेंट लैंड्स इनटू द हैंड्स ऑफ अ डॉक्टर हु इज नॉट trained for the disease, let's put it like that.
So sometimes this, if the doctor is good, they will contact the specialist and say please come and operate for me. Okay. But otherwise most of the times क्या होता है कि the treatment given is incomplete, and therefore then second भी unfortunately ऐसे ही किसी के पास land हो गया, third भी. So there are 5 files which come to like a Wikipedia, ऐसा encyclopedia जैसा आता है. Then when they come, by that time the patient only knows everything about the disease, because अगर कोई इतने साल से परेशान है तो वो patient becomes the best doctor. You know, chronic illnesses, ये ulcerative colitis, IBS, ये patient ही आधे से ज़्यादा latest research भी patient doctor को पढ़ाकर चले जाते हैं कि आपको नहीं पता है अभी ये एक और आ गया, because वो आपसे भी ज़्यादा रोज, because it's their life, तो उनको देखना ही है वो तो वो वैसा हो जाता है. तो patients, there are nowadays very informed patients. On the other hand, in our country at least, there are people who don't even, despite a long lecture also, they may just not understand the impact of it. And then there are scares. For example, I forgot to mention this, but this often mimics malignancy, cancer. तो एक ब्लड की टेस्ट होती है जिसे CA125 कहा जाता है, जो कैंसर में एक्चुअली रेज होती है, वो इसमें भी रेज हो जाती है. Okay. Because of the nature of the disease, the spreading element of the blood and all. तो कई बारी ये लोगों को कैंसर की डर हो जाती है, और फिर कोई लोग इसीलिए ओपन सर्जरी बोल देते हैं या कुछ, मतलब ऐसे मिसडायरेक्शन बहुत हो जाता है कई बार, टू because of these things that are not clear sometimes. Got it. Okay. Great. Thank you so much. I hope कि ये conversation से हमारे viewers को भी काफी benefit मिले. I'm sure मिलेगा. But it was really nice meeting you and speaking to you. Thank you. Thanks a lot.